Hello friends, in this session we'll continue with the concept of inheritance. Before we'll start this session, first we'll summarize that what we have discussed into the last session. We have started the inheritance chapter from the last session. In that session we have discussed what do you mean by inheritance, what are the types of inheritance, and finally we have discussed the method overriding and method overloading difference. So what are the different types of inheritance? We have studied the simple inheritance, that means we have only single base class and single derived class. Then multi-level inheritance, in which we can have the multiple levels of hierarchy. Then the third one is hierarchical inheritance. In that case we are having only one base class and two derived class. Then the fourth one is multiple inheritance, that means in this case we are having two base class and one derived class. That means that derived class inherits the properties from its both the base class. And the last one is hybrid inheritance. But out of all these five inheritance, Java supports only first three, that is simple, multi-level and hierarchical. Then we have discussed the difference between method overriding and method overloading. Overloading means what? Only name should be same, the number of arguments and data types of arguments are differ. But overriding means what? Method overriding means method की signature type बिल्कुल same to same होनी चाहिए. Then and then you can implement the concept of method overriding. And one more characteristic for this overriding is, to implement this concept compulsory you are having inheritance concept. So this is all about the summary of last lecture. We'll start this session. Okay, how to use the concept of constructor with inheritance. To explain this concept, we'll start a practical in NetBeans. So open the NetBeans. Okay, new project, Java application, next. I will give the name lecture 7, finish. And in this lecture right click, new Java class, constructor demo, finish. चलो अब हमको क्या करना है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर को यूज करना है और देखते हैं कि क्या होता है. चलो, फर्स्ट विल टेक वन बेस क्लास, class A. Then if I want to define the constructor for any class, then what are the different properties of constructor? The first property is it is having the same name as class name. Second property is it does not have any return type. And third property is what? It is automatically called when the object of class is created. Do you remember these properties of the constructor? Yes or no? Yes. If you forgot, then go and refer my 4th lectures of Java programming language. In that I have defined the constructor properties. Okay, now in this constructor I am going to write something inside base class. Okay, now we'll declare one derived class. Okay, इसको derive कब बोलेंगे? Whenever we are going to use the concept of inheritance. Class B extends A. Now इसके अंदर मैं और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ B, और इसके अंदर लिखता हूँ system.out.println inside derived class. So here we are having one base class with constructor, derived class with another constructor, and finally inside the main method I'll create the object of only derived class. Why only derived class? Because in the last lecture I have already given you the personal advice, if you don't require then do not create the object of base class, because it's not necessary. Why? Because with the help of derived class object you can perform and call any properties from the base class. Clear? Okay.
So in this program, one base class, one derived class, and finally we have created the object of derived class. Now we'll try to execute this program. Right click and run. Now let's check what output we will get, and the output is inside base class, then into the second line I will get the output inside derived class. ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमने ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का क्रिएट किया हुआ है? डिराइव क्लास का. ऑब्जेक्ट आप डिराइव क्लास का क्रिएट करते हो और कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का कैसे कॉल होता है? हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल? दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस. So remember this thumb rule. Whenever you are going to create whenever you are going to using the concept of constructor in inheritance, it always call the base class constructor first. Again I am repeating this sentence. In the case of constructor in inheritance, it always call the base class constructor first. भले आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया हुआ है? डिराइव क्लास का. इस लाइन का मीनिंग क्या है? JVM विल लुक फॉर द डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट्स. JVM विल लुक फॉर द कंस्ट्रक्टर इनसाइड द B क्लास विथ नो आर्ग्यूमेंट्स. तो हमारे पास बिना आर्ग्यूमेंट वाला B क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है? हाँ है, लेकिन B क्लास को मैंने कोई एक क्लास में से एक्सटेंड किया हुआ है. और कौन से क्लास से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है? A क्लास से. सो इन दिस केस JVM फर्स्ट ट्राई टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, एंड आफ्टर कॉलिंग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, then finally it will call the derived class constructor. That's why here I will get the output like inside base class and next one inside derived class. Clear? This is the most important concept. Again I am repeating the sentence. Whenever you are going to use the concept of constructor in inheritance, it always call the base class constructor first. Clear? Okay. इस प्रोग्राम को और थोड़ा बढ़ा देते हैं. We'll declare one more class, class C extends B, और इसके अंदर हम लिखते हैं C का एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. तो then I'm going to write inside C class, and in this case instead of creating B class object, here I am going to create the object of C class C1 equal to new C. Now प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की शुरुआत कहाँ से होगी? मेन मेथड से. मेन मेथड के अंदर फर्स्ट लाइन मैंने कौन सी लिखी है? हियर आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ C क्लास. सो एट दिस लाइन JVM will search for the C class constructor with no arguments. So ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है? हाँ है मेरे पास. So ideally आउटपुट पहले क्या आना चाहिए? Inside C class. But C ऑलरेडी मैंने किसी में से एक्सटेंड किया हुआ है, और किस क्लास में से किया हुआ है? B क्लास. So सेम पैरामीटर B के अंदर भी ढूंढने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स B क्लास के अंदर नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हाँ है, तो ये होना चाहिए प्रिंट. लेकिन अगेन वो चेक करने वाला है कि B को भी मैंने किसी में से एक्सटेंड किया हुआ है, और वो कौन सा क्लास है? आवर मेन बेस क्लास. और A को मैंने किसी में से एक्सटेंड किया हुआ है? नहीं किया हुआ. सो फाइनली इट विल प्रिंट दिस लाइन फर्स्ट, देन दिस एंड देन this. So this is the hierarchy that JVM will maintain to execute the constructor program in inheritance. So right click, run, and I will get the output inside base class, inside derived class, and inside C class. Clear? So this is the concept of constructor in inheritance. Up to this it is clear? Yes or no? Good. Now we'll study another keyword in Java, and that keyword name is dash dash dash. चलो पहले हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, बाद में हम वो कीवर्ड कैसे पिक्चर में आता है वो देखते हैं. बराबर? चलो. नाउ
I'm going to modify this program only. So I will remove the extra class from this one. Okay, class A and class B. Okay, into the class A I'm going to declare one variable integer A, and inside the base class constructor again I'm going to pass one argument. Okay, class B as it is, and here I'm going to create the object of derived class b1 equal to new b. That's it. Clear? So मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, you have defined one base class A with constructor and one argument. Then we have defined the derived class B which inherits the properties from its base class A. उसका भी खुद का एक मैंने कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है without arguments. And finally I have created the object of derived class only. मैंने क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे inheritance के अंदर generally no need to create the object of base class. Clear? लेकिन in this program NetBeans मुझे एरर दिखा रहा है, और कौन सी एरर दिखा रहा है चलो देखते हैं. पढ़ो तो, कंस्ट्रक्टर A in class A cannot be applied to given types. इसका मीनिंग क्या हुआ, चलो हम स्टार्टिंग से ही समझते हैं. नाउ कंसिडर ओवर हियर from which line your program will start executing. Okay, from the main method. Clear? Inside the main method मैंने फर्स्ट लाइन कौन सी लिखी हुई है, I have created the object of derived class. That means इसका मीनिंग क्या हुआ, JVM derived class के अंदर B के अंदर बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा. इज इट वो पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? वो कंस्ट्रक्टर, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है हमारे पास? यस है. लेकिन in this program we are going to use the concept of constructor with inheritance. Before printing this sentence, first it will call the base class constructor. लेकिन बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ऑलरेडी एक आर्गुमेंट डिफाइन की हुई है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये आर्ग्यूमेंट मुझे कहां पे पास करनी होगी. शुड आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास लाइक दिस, a1 इक्वल टू न्यू a and 2 like this? Is it possible? फिर भी मेरी एरर नहीं जा रही है, फिर भी वो नेटबीन्स मुझे एरर दिखा रहा है. सो ये सॉल्यूशन तो काम नहीं कर रहा है भाई. चलो तो और सॉल्यूशन कौन सा है? सर एक काम करो, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दो. चलो सो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी क्लास के अंदर एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर? नहीं है. करे तो क्या करे, कोई भी सॉल्यूशन यहां पे काम नहीं आ रहा. सो this is the problem, and to solve this problem Java provides a new keyword, and that keyword name is super keyword. So what is the use of super keyword? Super keyword is used to call any base class member from the derived class. Again I am repeating the sentence. Super keyword is used to call any base class member from the derived class. That means if I want to use the super keyword, then I can use that super keyword in derived class only. और उसका मीनिंग क्या, उसका यूज क्या है? By using super keyword I can access any base class member, and that member may be method, variable or constructor. Clear? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. इसी प्रोग्राम की एरर हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक आर्गुमेंट की जरूरत है, और डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए.
सो एक चीज अपने दिमाग में उतार लो, इफ देर इज एनी आर्ग्यूमेंट इनसाइड द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास के अंदर जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स है, जितनी भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने ली है, आंख बंद करके पहले तो वो सारी आर्ग्यूमेंट डिराइव क्लास के अंदर पास कर दो। यहां पे मैंने बेस क्लास के अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट ली हुई है, एक। सो पहले वो एक आर्ग्यूमेंट यहां पे पास कर लो, लाइक इंटीजर b1। क्लियर? नाउ डिराइव क्लास को खुद को अपनी कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये मैंने किसके लिए लिखी है, कौन से क्लास के लिए? बेस क्लास के लिए। सो उसको डिराइव क्लास में से बेस क्लास को में इसी आर्ग्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सुपर कीवर्ड, एंड इनसाइड द सुपर आई एम गोइंग टू राइट b1 एंड जस्ट कॉमा। एरर चली गई। So what is the meaning of this line? Super means I'm going to call base class constructor. Super b1, that means we are having one base class constructor with one argument. So this b1 will go to the base class using super keyword. So this is how you can use the super keyword with constructor. Again I am telling you, super keyword is used to call the base class constructor from derived class constructor only. अगर मुझे सुपर कीवर्ड से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कंपल्सरी आई हैव टू राइट द सुपर लाइन इनसाइड द डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर ओनली। इस कंस्ट्रक्टर के अलावा और इस कंस्ट्रक्टर के बाहर मैं सुपर कीवर्ड लिख के कभी भी कोई बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवा सकता। क्लियर? So this is the first use of super, how super keyword is used to call the base class constructor. Is it clear? Good. Now one more thing. Super keyword का अगर आपको use करना है, so compulsory inside the constructor you have to write down this sentence in first line only. चलो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट लाइन में नहीं लिखता और सेकंड लाइन में लिखता हूँ, then it will show me an error. Why? Because अगर आप उसको सेकंड लाइन में लिखते हो, so JVM will never recognize कि बेस क्लास में उसको कैसे जाना है। so एक बार पूरा एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। चलो, मेन मेथड डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, एक आर्गुमेंट, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, JVM विल लुक फॉर दी बी क्लास कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्गुमेंट। है ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बी क्लास के अंदर एक आर्गुमेंट वाला? हाँ है। ओके, देन इस क्लास को मैंने एक्सटेंस किस में से किया हुआ है? ए में से। दैट मीन्स वो पहले कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला है? फ्रॉम दी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। लेकिन वो कॉल करने से पहले बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फर्स्ट लाइन कौन सी लिखी है? सुपर b1। सो विद द हेल्प ऑफ सुपर एंड b1, माउस कर्सर विल गो टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड देन इट विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट. Then after completion of this constructor execution, it will come to this line and finally it will print this statement. Clear? Right click, run inside base class, inside derived class. So this is how you can use super keyword. एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. Super keyword is used to call the base class constructor from the derived class constructor only. और अगर आपको super keyword वाली लाइन लिखनी है, then compulsory you have to write this line as the first line inside the derived class constructor. Clear? Okay, good. So this is how you can use super keyword to call the base class constructor. Okay.
नाउ सेम सुपर कीवर्ड अगर मुझे मेथड के लिए यूज करना है तो वो कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। सुपर मेथड फिनिश, इसको हम पहले निकाल देते हैं। क्लास A1 will take one method public void show, and in this method I'm going to write system.out.println inside base class method. I will declare one derived class extends A1, and again I'm going to repeat this method in derived class public void show. Ultimately I am showing you the concept of method overriding. याद है ना last session? Okay. Inside derived class method, and finally inside the main method I am trying to call. First I will create the object of derived class b1b equal to new b1, and with the help of b dot show. क्लियर? सो क्या किया हुआ हमने यहाँ पर, एक बेस क्लास लिया है, उसके अंदर एक शो मेथड दैट डिराइव क्लास, उसके अंदर भी सेम शो मेथड. दैट मीन्स हियर आई हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. Then with the help of derived class object I have called the derived class, or I have called the show method. So what is my question? Which show method will call by your JVM when you write this b dot show? Obviously यहाँ इस मेथड के आगे मैंने रेफरेंस कौन से क्लास का क्रिएट किया हुआ है, b क्लास का. So obviously it will print inside derived class method. But if I want to print this message, if I want to call base class show method without creating the object of base class, how can I call the base class method? For that again a super keyword is used. So that is the super keyword second use. हमने first use क्या दिखा, that the super keyword is used to call the base class constructor from the derived class constructor only. Same way I can also use super keyword into the derived class method to call the base class method. अगर आपको base class का constructor call करवाना है then you have to write super keyword into the derived class constructor. अगर आपको base class की method call करवानी है then you have to use super keyword inside the derived class method. चलो super dot show. सो सुपर डॉट शो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैं कौन सी शो मेथड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेस क्लास की शो मेथड की बात कर रहा हूँ. सो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट बी डॉट शो देन इट विल कॉल द डिराइव्ड क्लास शो मेथड, एंड इन दिस मेथड as a first line what I have written super dot show. So first it will call the base class show method, it will print inside base class, then finally it will print inside derived class. Right click, run, and I will get the output. So this is how you can use the super keyword with the method also. Clear? So we have already completed two use of super keyword. Now the third use, how to use this super keyword with the variable. हमने constructor के साथ देख लिया and मेथड के साथ देख लिया. क्लियर? ओके. चलो इसी प्रोग्राम के अंदर हम वो देख लेते हैं इंटीजर. यहाँ पे एक इंटीजर i इक्वल टू 10. सो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है बेस क्लास के अंदर. सेम वेरिएबल, उसी नाम का वेरिएबल मैं डिराइव क्लास के अंदर भी प्रिंट करता हूँ, इंटीजर i इक्वल टू 20. नाउ इसको निकाल देता हूँ. देन चलो इस मैसेज को चेंज कर देता हूं. वैल्यू ऑफ i इज प्लस i. क्लियर? सो यहां मैं i की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं. सो ये i की वैल्यू कौन से प्रिंट होगी, डिराइव क्लास की या फिर बेस क्लास की? Because this is the concept of inheritance, so I can access any public member of the base class inside the derived class.
यू गॉट माई पॉइंट. सो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है. सो व्हाट इज माई क्वेश्चन, ये आई की वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी? ये 20 प्रिंट होगी या फिर बेस क्लास में से 10 प्रिंट होगी? ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा? 20. गुड. राइट क्लिक, रन, आई विल गेट द आउटपुट वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 20. बट अगर मुझे बेस क्लास का वेरिएबल चाहिए तो आप लोगों को अभी तो सॉल्यूशन पता है. आई कैन कॉल द बेस क्लास वेरिएबल यूजिंग विच कीवर्ड? गुड, सुपर कीवर्ड. एस आउट वैल्यू ऑफ आई इज प्लस सुपर डॉट आई. चलो, राइट क्लिक, run, value of I is 10 and value of I is 20. Clear? So these are the three use of super keyword. How you can use the super keyword with constructor, how you can use the super keyword with method, and how it is possible to use the super keyword with variable. And this is the most important keyword in inheritance. Clear? So super keyword is generally used to call the base class member, and that members can be anything. It can be a variable, it can be a method, or it can be a constructor. So this is all about this lecture. You can also find all these video lectures inside my blog pinalshahit.blogspot.com. So that's it from this session. We'll meet into the next session with some more interesting concept. Clear? Okay, so thank you, goodbye, thank you for listening. Thank you.